अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनोशीन चौधरी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी चौधरी आसिफ अली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी। होप सो कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज हम जो आपके लिए वीडियो लेके आए हैं उसका नेम है मेगा प्रोजेक्ट्स ऑफ बांग्लादेश इकोनॉमी लेगेसी टावर। तो जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं बांग्लादेश के फ्यूचर में होने वाले, वो इस वीडियो में शायद सारे उन्होंने बताए हुए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप टाइमली वीडियो देखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। Bangladesh is moving on up. The South Asian nation has the fastest real GDP growth rate of any country, and investors hail it as a top emerging market. Currently, it enjoys the world's 29th largest economy based on purchasing power, and several mega projects are underway within its borders. In this short video, we're going to talk about a few of the mega projects Bangladesh is working on. If you enjoy this kind of video, don't forget to subscribe and give it a like. Padma Multipurpose Bridge. Considered the most challenging mega project currently underway in the country, the Padma multipurpose bridge spans the Ganges River and connects the southwest region to northern and eastern areas. The structure accommodates a 4-lane highway on top and a single-track railway on the lower level. The massive truss bridge will be about 4 miles when completed, the nation's longest. Officials in the country have high hopes for the Padma multipurpose bridge and believe it will boost the local economy by 1.2%. Purbachal residential model town. Dhaka, the country's capital city and the 9th most populous metro region in the world, is bursting at the seams. To accommodate the growth, developers are expanding into surrounding territories. Purbachal residential model town is the most anticipated build-out and a hotbed of investment opportunities. Located just 16 miles from the center of Dhaka, Purbachal residential will occupy over 6,000 acres and include residential, recreational, business, and institutional components. Notably, Dhaka University will also open a second campus in Purbachal. Legacy Tower. Part of the Bangabandhu Tri-Tower development site, Legacy Tower is scheduled to be a 111-floor skyscraper in the new Purbachal business district. Hirim architects designed the building, and engineering teams from Japan, France, and South Korea are collaborating on the build. A modern undertaking, Legacy Tower will feature state-of-the-art solar power technology and automatic waste systems. Construction began on Legacy in September 2020. Down the line, the Liberation and Language Towers are scheduled to complete the trio of planned high-rises. Sheikh Hasina International Cricket Stadium. Construction on the $140 million, 38-acre Sheikh Hasina International Cricket Stadium, aka The Boat, began in November 2019. When finished, it will be Asia's largest cricket arena, accommodating 50,000 seats with an option to add 25,000 more. The stadium is a point of national pride among Bangladeshis who feel the same way about cricket as Texans do football. Moreover, the facility will be much more than just a place to play the original gentleman's game. Sheikh Hasina Stadium will also house pavilions for water sports, cultural performances, exhibitions, and indoor recreation. A government-backed endeavor, both the National Sports Council and the Cricket Board are linked to the project, and everyone is hoping for a 2022 opening. Once completed, the stadium will serve as a home base for 3 cricket clubs: the national cricket team, the Dhaka Dynamites, and the Bangladesh Premier League. Dhaka Elevated Expressway. Dhaka's explosive population growth and relatively small landmass have made it the poster child for infrastructure dysfunction. A 2016 New York Times article framed the city's dire traffic situation as, quote, traffic in extremis, a state of chaos so pervasive and permanent that it has become the city's organizing principle. To give you an example, in Dhaka, it's not uncommon for an 8-mile drive to take 2.5 hours. But officials hope to fix the crisis with the Dhaka Elevated Expressway, a 150,000-foot highway that will run between Shah Jalal Airport and Kutub Kali. The country's prime minister announced the $1.4 billion project in the spring of 2011 and gave it a 3-year completion timeline. But things didn't work out exactly as planned. As of 2021, the elevated expressway still isn't complete, thanks in part to early logistical struggles and a worldwide pandemic. However, there is a glimmer of hope that it will be done by 2022. For denizens of the overcrowded city, it cannot come soon enough.
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Tunnel. Expected to open in 2022, the Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Tunnel, aka the Karnaphuli Tunnel, will be the first river tunnel in Asia. Located in Chittagong, the country's most active port city, the underground thruway will measure 2.06 miles and span about 34 feet. Analysts expect the final tally to be in the $1.1 billion range, and about half of the project's financing is funneling through the Exim Bank of China. Dhaka Subway. In the not-too-distant past, common wisdom discounted a Dhaka subway on account of the country's monsoonal flooding. But where there's a will, there's a way, and engineers figured out how to make it happen. So if all goes according to plan, the city will have a fully functioning underground train network by 2041. The $8 billion venture is expected to span 160 miles and run 11 lines. But don't expect to hop on the Dhaka Express anytime soon. The first line probably won't be open for at least another decade. Matarbari Port. Located in the Moheshkhali region, Matarbari is a deep-sea port, the country's first. It's modeled after two highly trafficked ports in Japan, Niigata and Kashima, and the Japanese International Cooperation Agency won the contract to manage it. Part of the port is complete and boats have already docked at Matarbari. However, the project won't be 100% done until 2026. Rooppur Nuclear Power Plant. The country's first nuclear power plant, Rooppur, is about 87 miles west of Dhaka. Rosatom, State Atomic Energy Corporation, a Russian conglomerate, is building the energy-critical components, and local developers are handling the rest. 2023 is the target launch date for 2 units, and officials hope it will help alleviate some of the region's energy issues currently exacerbated by the growing economy and population. Terminal 3 at the Hazrat Shahjalal International Airport. Next year, another terminal is slated to open at the Shahjalal International Airport. Considerable in size, it will have 12 boarding bridges, 12 accompanying conveyor belts, 115 check-in counters, and 59 immigration desks. Like its neighbor, India, Bangladesh has positioned itself to become a significant economic force on the world stage, and savvy investors are wise to get in on the action now, while the getting is still good. Keeping in mind this video was a short one, comment below on any mega project I forgot, and as always, I'll see you in the next video. जी तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इसमें से बहुत सारी चीज़ें पे हमने वीडियोस देखी हुई थी, रिएक्ट किया हुआ था। जो पद्मा ब्रिज है उस पर हमने रिएक्शन दिया था, वो एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और वो तो बांग्लादेश के लिए हाँ मल्टीपर्पज़ ब्रिज है। उसके अलावा जो उन्होंने बताया शेख मुजीबुर रहमान टनल, वो भी काफ़ी बिग प्रोजेक्ट था। ढाका सबवे है, उसके अलावा लेगेसी टावर, ट्राई टावर जो है उस पर भी हमने रिएक्शन वीडियो बनाई थी। मतलब ये अमेजिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें उन्होंने हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ज़बरदस्त किस्म का जो है ये टावर का जो है वो उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है। और इसके अलावा जो एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है शेख हसीना क्रिकेट स्टेडियम, तो इट्स एन अमेजिंग थिंग कि ये सारी चीज़ें जो है बांग्लादेश की जीडीपी को जो है और ग्रो करेंगी, और बांग्लादेश जो है वो उसका नाम उभर के सामने आएगा। क्योंकि वैसे भी बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो पैंडेमिक में भी सबसे ऊपर ही रही है। मतलब लोगों की बाकी कंट्रीज़ की नेगेटिव में गई है, लेकिन बांग्लादेश की जो है वो पॉजिटिव में ही रही है। तो बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट्स हैं ये। बहुत ज़बरदस्त वीडियो लगी है। ढाका मेट्रो का उन्होंने बताया, ढाका जो बुलेट ट्रेन है, उसके बाद ढाका एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, और जो टनल है वो बहुत ज़बरदस्त बता रहे थे। एशिया का फर्स्ट टनल है जो शेख मुजीबुर रहमान टनल, आई थिंक उसका नाम, तो वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस तरह और बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। ढाका सबवे है, तो ये सारे प्रोजेक्ट जो है बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा आगे ग्रो लेके जाना। 29 नंबर पर बता रहे थे बांग्लादेश इस टाइम है इकॉनमी वाइज। बांग्लादेश जो है पाकिस्तान और इंडिया से नॉमिनल जीडीपी में तो आगे निकल ही चुका है। एक बांग्लादेश का शहरी जो है इंडिया और पाकिस्तान से ज़्यादा कमा रहा है, और बांग्लादेश की इकॉनमी पाकिस्तान से आगे है। और इंडिया बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी जो जीडीपी ग्रोथ है बांग्लादेश की ज़्यादा है। तो नो डाउट बांग्लादेश में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, और उम्मीद करते हैं इसी तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगते रहें ताकि बांग्लादेश और ग्रो करे। जी वी होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने कोई वीडियो रिकमेंड करनी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताते रहा करें। और डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का भी जो है वो लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी फॉलो कर लें। वहाँ पे भी आप मैसेज करके वीडियो बता सकते हैं। तो अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।